Everyone is looking forward to investing their money smartly to earn major profits. And it is a reason why people are running after cryptocurrencies. अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो उसकी वैल्यू अभी 85 लाख टच कर चुकी है, जो एक मेजर रीजन है कि क्रिप्टोकरेंसीज इतनी अट्रैक्टिव क्यों है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी स्कैम्स एक मेजर कंसर्न है, especially with the rise of decentralized and often anonymous digital currency. Hello my dear students, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं cryptocurrency scams. So let's get started. While the nature of these scams vary, they typically exploit the lack of regulation, volatility, and the relative inexperience of many investors in cryptocurrency space. अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मेजर स्कैम। सबसे पहला स्कैम आता है OneCoin, जो 2014 से 2017 के अंदर देखा गया। अगर मैं स्कैम टाइप की बात करूं, सो इट इज अ काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम। नाउ लेट्स नो, OneCoin एक लार्जेस्ट और मोस्ट इनफेमस क्रिप्टो करेंसी स्कैम है हिस्ट्री का। इसको प्रमोट किया गया था एज अ क्रिप्टो करेंसी जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। OneCoin claimed to have its own blockchain and was marketed as a legitimate alternative to Bitcoin. However, it turned out that there was no blockchain at all. जो फाउंडर हैं Ruja Ignatova and others behind the scheme, they were actually accused of defrauding investors of over $4.4 billion. And now Ignatova has disappeared and remains on the run. Now, what is the impact? The scam affected over 3 million people globally, with many losing significant amounts of money. The next is going to be BitConnect scam, which is again Ponzi scam type, और ये 2016 से 2018 के बीच में देखा गया। BitConnect एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जिसने प्रॉमिस किया अपने यूजर्स को हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट by participating in a lending program. Users were encouraged to lend their Bitcoin in exchange for BitConnect tokens, which would generate significant interest. लेकिन रियलिटी में बात करें तो ये प्लेटफॉर्म एक्ट कर रहा था एक पॉन्जी स्कीम की तरह, जिसमें नए इन्वेस्टर्स के फंड यूज किए जा रहे थे to pay returns to earlier investors. In January 2018, BitConnect abruptly shut down, causing massive losses for its users. Now, what's the impact? Investors lost an estimated $1 billion. BitConnect's collapse sparked regulatory actions in several countries and prompted many to call for more regulation in the crypto space. Next is Plus Token, which is again highlighted in 2018 to 29, और इसका स्कैम टाइम भी पॉन्जी स्कीम जैसा ही है। Plus Token was a cryptocurrency wallet and investment scheme that promised users high returns in exchange for depositing their Bitcoin, Ethereum, and other cryptocurrencies. In mid-2019, the platform abruptly collapsed and the founders were arrested. Now let's know what was the impact. Plus Token एस्टिमेट किया जाता है डिफ्रॉड करने में अपने इन्वेस्टर्स को of approximately $2 billion, making it one of the largest scams in the history of cryptocurrency till now. Now the next is SafeDroid, which was highlighted in 2018, और इस स्कैम का टाइप है एग्जिट स्कैम। Now let's know what was it. SafeDroid एक जर्मन क्रिप्टोकरेंसी स्टार्टअप है that launched an initial coin offering ICO in 2018. After raising funds, the company's CEO staged an exit scam by posting a message on social media that appeared to show the company had disappeared, along with investors' fund. It turned out to be a stunt designed to bring attention to the risks of cryptocurrency investments, but जो कंपनी के एक्शंस हैं उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट कर दिया। Now what's the impact? Though the company was not actually a scam in its traditional sense, the stunt caused panic and led to a loss of trust in its operations. The next is going to be BitPetite, जो अभी 2020 में देखा गया। The scam type over here is Ponzi scheme and fake exchange. BitPetite was a cryptocurrency exchange जिसने promise किया high returns for trading and staking cryptocurrency. Users were encouraged to deposit funds into the platform, but when they attempted to withdraw their earnings, they were unable to. BitPetite turned out to be a fraudulent platform जिस पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही थी और एक्सचेंज ऑपरेशंस भी नहीं थे। जो स्कैम के ऑपरेटर्स थे, they disappeared, taking user funds with them. Now what was the impact?
Though it didn't make the same waves at BitConnect or OneCoin, but many investors lost money due to the fraudulent nature of the exchange. देखिए, क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स एक बहुत ही बड़ा सीरियस रिस्क पोज करते हैं इन्वेस्टर्स पर, पर्टिकुलरली इन एन इंडस्ट्री दैट लैक्स स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। अब हमारे पास जो बैंक्स हैं इसमें हम प्रॉपर रेगुलराइज करते हैं चीज़ों में, बट क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। Many of these scams have caused significant financial losses, leading to calls for more regulation and oversight of the cryptocurrency market. जो एक रीजन है क्यों बाकी सभी कंट्रीज इन क्रिप्टो करेंसीज को एक ऑफिशियल स्टेटस नहीं दे रही हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, इन्वेस्टर्स को थॉरली सर्च करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स में इफ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग देयर। और एक और चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर कोई भी चीज आपको लगती है टू गुड टू बी ट्रू, देन इट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। So you can avoid high risk ventures without transparency and credibility. That is going to be all. Thank you very much.